Started the recording. All right. Okay. So good morning, good afternoon, good evening to everyone as applicable. So first, I would like to introduce Mr. Geoff McNamara. He's joining us from Canberra, from the MSATT telescope domes. So Geoff has been a prolific teacher, an astronomer, and he is currently the convener of the ACT Science Mentors. ACT stands for Australian Capital Territory. So he convenes and he's leading the Science Mentor program there, which basically is, it facilitates high school students in the ACT region to come and do projects with various, with scientists in various fields of science all across Canberra. I'm sure Geoff will tell us much more about the MSATT telescopes and what sort of work they have been doing. So just for the benefit of the students, Geoff, I'll just quickly translate what I just said. So जेफ सर जो है वो कैनबरा में है, ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया से आज हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वो आप जैसे कि देख सकते हैं, वो एक टेलीस्कोप एमसैट जो टेलीस्कोप है, वो टेलीस्कोप के अंदर, वो टेलीस्कोप डोम के अंदर है। और हमको थोड़ी देर में वो हमको दिखाएंगे कि टेलीस्कोप के डोम के अंदर कैसा दिखता है और बाहर कैसा है। और जेफ सर खुद एक बहुत सालों से, लगभग 40 सालों से एक टीचर रह चुके हैं। वो बहुत ही विजनरी आदमी है। वो कैनबरा के जो साइंस मेंटोर प्रोग्राम है उसको लीड करते हैं, उसके कन्वेनर है, और उसके बारे में भी वो हमको बताएंगे। तो हम जल्दी से एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन कर लेंगे हमारे बीच में। तो आई थिंक we'll start with the OFC team members first. So Iqbal, do you want to go first? Just if you could introduce yourself briefly. Yeah. Hey, hi Geoff. Remember me? It's been a while. I do. Yeah, How are I you? mean, yeah. We are really happy that you are finally able to join us in this session, and we really look forward to the session today. And thanks a lot for doing this. And I'm sure the kids are the ones who are the primary beneficiary, and we all are here to learn something from you today. All right. Thanks a lot again. Yeah. Shaq. Hi, I'm Sayak. I was like me, Iqbal, Oyon, all of us were at Johns Hopkins together, where we kind of started with this thing. And I know we've been talking for a while, so finally we've got here that we have you on this Zoom session. So this is really good, and I'm sure that the kids are like about to have a really good experience. I don't think that any of these kids ever thought that they're going to actually look at a telescope sitting in Australia. I don't think anyone ever even envisioned that. So this is going to be a great opportunity. So thanks a lot for doing this, Geoff. Sure. देवेंद्र जी, क्या आप बस शॉर्ट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, अपने आप को और अपने स्कूल के बच्चों को थोड़े एक दो सेंटेंस में? Good afternoon, sir, and I am Devendra Kumar, UPS Bhadgaon, district Bulandshahr, Uttar Pradesh, India, and I am science teacher and beginner astronomer as well. And our students here. We are working on astronomy since last 3 to 4 years, and we are very eager to talk to Mr. Astronomer. I don't know his name. So Geoff thank you so much. Could you put his name in the chat? Just Mac. Thank you so much. Yeah. Mac is easy. Shashi ji, can you please introduce yourself very briefly? Yeah, hi. Hello everyone and good afternoon, sir. Very warm welcome to our session. And I'm Shashi Rathi, along with my little astronomers, and it is our lab, well-decorative astronomical lab, as you can see, sir. And we are very happy to be a part of this session. Thank you so much. Thank you, Shashi ji.
And Geoff, as you can see, mostly the sessions that we do, our cohort is based on these two schools. Both of them are in Uttar Pradesh in India. And most of the students join from the classrooms, as you can see. There are some students who also join from their home, but they also belong to these schools. But they fortunately have a good enough internet at their home, so they don't have to come to school for the sessions. But yeah, it's mostly these two schools that we have at the moment. But each session when we record the sessions and we upload them on YouTube. So there are lots of other students as well who express interest in joining, but just the date and time didn't work out for them. So they usually follow the YouTube recording, and then they let us know if they have any questions and stuff. So that's how we're going at the moment. We will see. Hopefully, we can expand in future. But this is, as you very well know, it's the very first time we are all doing it. We are all very new to this. You are way more experienced at this compared to us. So yeah, we are very fortunate and very thankful for you. Thankful to you for agreeing to be here with us, and we are looking forward to all that you have to share about MSATT and about Science Mentors, and definitely looking forward to seeing inside and outside the domes. I think the students will be really excited and will benefit a lot from that. So yeah, over to you, Geoff, and feel free to start sharing the screen whenever you feel the time is right. No worries. So, Thank sorry, just one more thing, because as you might have noticed, maybe like every couple of minutes or so, when you think there's a natural stopping point, if you could stop, and I would be happy to translate just so that the students understand. They do know English, but they might have trouble with fast speaking or sometimes the accent. So it will just be easier for them if I can translate in Hindi, after every couple of minutes or so, whenever you feel like giving a break. Look, yeah, just interrupt that. Okay, I will do. When I've talked enough, you tell me. Just hold on a second, and I'll stop. Sure. Okay. But look, yeah, we'll muddle through somehow. Yeah. Awesome. Okay. Look, this is a brilliant initiative, and look, hi kids. It's wonderful to meet you all, and you're so lucky to have this opportunity that's been set up for you. And especially to the teachers, hello, it's nice to speak to teachers on the other side of the world. So this is a terrific opportunity. And I'm really pleased that MSATT is able to play a small part in this as well. And who knows, maybe in the future we can make this something a little bit more regular. So what I would like to do this afternoon for you is just show you around this facility, give you an idea of the sorts of projects that we undertake here. And if we're lucky, at the moment it's very windy here, and I have a policy, if it's too windy, that I have to close the dome, and that's what's the situation at the moment. But if the wind continues to die down, which I think it is, we'll be able to point MSATT-1, which is the telescope behind me, to the moon, and we'll give you a live feed from the telescope pointing at the moon. And I don't know whether it's clear sky there or not, but the moon is up in your sky as well, as far as I can tell. So look, there's the possibility there. And this is something I've always wanted to do, to have students in another country looking at the moon at the same time that MSATT is looking at the moon. And that will act as a sort of connector between us. So yeah, so before I show them around, Ian, do you need to translate all of that? Yeah, absolutely. तो जेफ जी बेसिकली बोल रहे हैं, पहले तो वो बहुत ही खुश हैं आप सब लोगों को देख के कि आप सब जुड़ पाए हमारे साथ, इतने सारे स्टूडेंट्स देख के वो बहुत ही खुश हैं, और उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनको भी इंडिया के टीचर्स से मिलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो खुद भी एक टीचर रहे हैं। तो आज प्लान ये है कि वो अभी MSATT टेलीस्कोप के डोम के अंदर है, वो टेलीस्कोप के डोम के अंदर हमको दिखाने वाले हैं, थोड़े बात करने वाले हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे प्रोजेक्ट होते हैं। और अगर विंड जो है, जो हवा चल रही है बाहर, अगर वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि अभी बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तो विंड थोड़ा कम हो जाए तो वो शायद हो सके कि हमको वो बाहर जो कैमरा है उनका, वो बाहर लेके जाके भी हमको बाहर दिखा सकते हैं कि टेलीस्कोप के बाहर जो माउंट स्ट्रॉमलो ऑब्जर्वेटरी है वो कैसा दिखता है, वो भी शायद हमको देखने का मौका मिलेगा आज। और अगर वेदर थोड़ा क्लियर हो जाता है वहां पे, तो वो टेलीस्कोप के थ्रू हमको मून दिखा सकते हैं। जो चांद है वो आपने भी दिखा होगा अपने अपने टेलीस्कोप से, बट वो ऑस्ट्रेलिया के
आसमान में अभी जो मून है वो आपको टेलीस्कोप से शायद दिखने को मिलेगा। और अभी इंडिया में, यूपी में बाहर आप अगर आप जाएं तो मून अभी भी आसमान में दिख रहा है। तो वो थोड़ा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वही जो एक ही मून है वो अभी कैनबेरा में भी दिख रहा है और यूपी में भी दिख रहा है। तो हम साथ में देख सकते हैं, जैसे कि जब जी भी दिखाएंगे और आप लोग ऐसे बाहर भी देख सकते हैं। तो वो बड़ा बड़ा मजा आने वाला है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। Let's see. Yeah, I'd like to say something here, and I'll say it in English and I'll translate it in Hindi. And I think everybody should know that this program, as Geoff said, is called One Sky. And this name, like, we didn't come up with it. It was Geoff who came up with this name. So, and it kind of links up with what we're talking about. Like, it's one sky for everyone. The moon that he's about to show is also what you're seeing. So, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम का नाम है हम लोग का OFC वन स्काई नाम है ना, तो ये वन स्काई नाम जेफ जी का ही दिया हुआ है। हम लोग जब ये प्रोग्राम पहली बार उनको सजेस्ट किए थे तो वही बोले थे कि इसका नाम, इस प्रोग्राम का नाम वन स्काई रखो, क्योंकि वन स्काई सबके लिए आसमान एक है। जो वो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहे हैं वही हम लोग इंडिया में देख रहे हैं। तो दिस द वन स्काई आइडिया, द वन स्काई नेम, Jeff was the one who came up with it. I thought that deserved a mention. Very good point. Thank you. Very Just good. to clarify, though, it wasn't actually me. It was my wife. It was your wife, right? It was your wife. Yeah. I got home and we were standing in the kitchen, and I told her what we were planning and we needed a name for it. And she thought for about 2 seconds and said, "One Sky," because it's one sky that's uniting everybody. And I thought, yeah, that's true. And everybody. That was beautiful. Yeah. But it was my wife that did that, not me. Okay. All right. So we're ready to go with a bit of a look around the place now. Yep. Okay. All right. So just to clarify for the students, the whole idea of this teaching facility, and I love the classrooms that you guys are in. That mural on the ceiling is beautiful, by the way, absolutely fantastic. But this facility here was designed from the beginning to be operated by students, not by me. I teach the students how to operate this facility. So everything you're about to see, students in years 9 through to 12 operate. They learn how to operate the telescopes, they learn how to operate the instruments, they learn how to gather their own data, how to process it, analyse it, and how to write a report on their findings. Now, we do that through Science Mentors. We do that for basically all the different branches of science, but half of the program every year is taken up with astronomy. Astronomy is the subject area that attracts the most students by far. So to put it in perspective, you might have a field like physics or forensic science or genetics attracting 1, maybe 2 students. Every year, MSATT attracts 25 students, and they do projects through here. So the telescope that you can see behind me is MSATT 1, and this is the first time I've done this, so I'll do my best. But this is the original telescope. I don't know how much of that you can see, hopefully a fair bit. This is MSATT 1, and it's on a robotic mount. And the whole idea is that this telescope can have instruments attached to it that allow the students to make observations of different kinds. And I'll give you some examples of that a little later on. So this was the original telescope. We commissioned this in 2016. And within the first year, the facility was completely oversubscribed. And so the benefactors who put up most of the money to get the program started, that's Dennis and V. Saunders, they said, well, you're just going to have to build another telescope. And that's what I did. And that's the one that I'll show to you shortly. Now, if I come around this side, try and get this angle correct, you can actually see, so I'm trying to do this on the fly, MSATT's actually a number of telescopes in one. You can see the main telescope there, that blue one, but it's got a smaller white telescope mounted on the side. And the 2 telescopes do entirely different things. The main telescope is very high magnification work, looking at things up close and in detail.
The white telescope is for taking very wide angle views of the sky. And if we come around a little bit further, you can see I've got a small camera mounted on the back. That's that red camera. That's what we'll be observing the moon with later on if we can. And also on the side, you'll see there's a small gold telescope that is specifically for looking at the sun. And so MSATT is really a collection or a suite of instruments, and each one has a specific purpose or a specific task. So do you want to translate all that, Ian? Yeah. Is that enough? Exactly. I think that's a good point. तो जेफ सर ये बोल रहे हैं कि ये जो MSATT जो टेलीस्कोप है, ये जो पहला वाला टेलीस्कोप है जो अभी वो हमको दिखा रहे हैं, ये MSATT के पहला टेलीस्कोप है जो 2016 साल से चलते आ रहे हैं। इसका जो पहला जो फंड रेजिंग था, जो डोनेशन था, वो मिस्टर सॉन्डर्स ने दिए थे, इसीलिए इसका नाम है मैकनामरा सॉन्डर्स एस्ट्रोनॉमी टीचिंग टेलीस्कोप। और ये MSATT टेलीस्कोप से कैनबेरा का जो साइंस मेंटोर जो प्रोग्राम का मैंने जिक्र किया था शुरू में, वो साइंस मेंटोर बहुत सारे साइंस के बहुत सारे फील्ड से होते हैं। आपके स्कूल स्टूडेंट्स क्लास 9 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स आके खुद ये टेलीस्कोप ऑपरेट करते हैं, वो खुद अपना डेटा लेते हैं और वो खुद एक उसके एंड पे, वो जो 6 महीने का प्रोजेक्ट होता है, 6 महीने के एंड पे वो एक रिपोर्ट लिखते हैं और रिपोर्ट लिख के सबमिट करते हैं उनके अपने अपने स्कूल्स को। ये जो है ये साइंस मेंटोर्स का सिस्टम है। उसके लिए मेंटोरिंग भी होता है, मतलब उनको गाइड करने के लिए प्रोफेसर्स या स्टूडेंट्स और पोस्ट डॉक्स भी रहते हैं, जेफ सर खुद रहते हैं। बट जो काम है सारा वो स्कूल स्टूडेंट्स जो है, जैसे आप लोग जैसे क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं वही करते हैं। और हालांकि ये पूरे सारे फील्ड्स ऑफ साइंस को इंक्लूड करता है, बट आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमी के ही होते हैं इस प्रोग्राम में। लगभग हर साल 25 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस MSATT टेलीस्कोप में काम करते हैं। और लास्ट नहीं 2 साल पहले से एक दूसरा MSATT टेलीस्कोप भी आ चुका है, इसमें जुड़ चुका है, जो हम देखेंगे थोड़ी देर में। बट ये पहला वाला जो MSATT टेलीस्कोप है, वो आपने देखा कि एक अकेला टेलीस्कोप नहीं है, इसमें एक्चुअली 3 टेलीस्कोप का एक कलेक्शन है। जो मेन जो बड़ा टेलीस्कोप दिख रहा है वो है जो मैग्निफिकेशन या फिर दूर की चीज पास लाके देखने के लिए, और जो सफेद व्हाइट टेलीस्कोप जो दिखा आपको उस साइड पे, वो है जो जो वाइड एंगल शॉट्स, जैसे कि हम ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं चाहिए, कभी कभी होता है कि पूरा आसमान का फोटो लेना चाहते हैं हम, तो उसके लिए वो वाइट टेलीस्कोप है। और ये जो पीले रंग का, ये जो गोल्डन रंग का जो टेलीस्कोप छोटा सा दिख रहा है, वो है सन के लिए, वो बस सन का टेलीस्कोप है। और ये जो लाल रंग का जो कैमरा दिख रहा है इस तरफ आप लोगों को, वो रेड कैमरा है, वो कैमरा लगा हुआ है टेलीस्कोप के साथ, जिसके साथ ये इस टेलीस्कोप से हम फोटो ले सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं। और आज अगर वेदर अच्छा रहा थोड़ी देर बाद, तो जेफ सर हमको मून जो दिखाने वाले हैं वो इसी कैमरे के थ्रू दिखाने वाले हैं। I think Jeff, you can go on. Over to me? Okay, all right. So like I said, the first telescope, this one here, was MSATT 1, and it was oversubscribed, so they said, well, you're going to have to build another one. So let's go outside now, and this is where it's going to get a bit interesting. So see for MSATT 1, and the surrounds, you can see that we've got some trees started to grow here. Oh, you still see me? You still getting a good vision, Ian? Ian, are you there? Yes. Yep. Sorry, I was nodding and we're then I seeing it. realized you probably can't see me. Yeah, I can't see anything other than the picture that I'm showing you. So, just we're seeing let me it know all. if It's you can. beautiful. Excellent. Over here, you should be able to see our little weather station just there in the middle of the shot. So, wind speed, direction, temperature, and rainfall, and so on. Out to the Brindabellas, out to the west, and we're just on sunset here. But then we swing around and you can actually see the dome for MSATT 2. So let's see into
do this, hopefully. That's pretty good. You can actually see some of the other domes at Mount Stromlo. And if I can get this angled correctly, there we go. You can see that big dome over on the left-hand side of the image there. Yeah. 74 telescope used to be here. Of course, all the telescopes were destroyed in the 2003 bushfires. And in fact, MSATT was built on the ruins of one of the observatories. Okay, so let's go down and have a look at MSATT 2. And let's go inside. Before you Yeah. go, I mean, feel free to go inside. I think I'll just recap what you just said about the outside. Okay, yep, no worries. तो जैसे कि अभी हमने देखा जो हम अब नजारा देख रहे हैं, ये कैनबेरा के माउंट स्ट्रॉमलो ऑब्जर्वेटरी का है। ये एकदम पहाड़ के ऊपर है क्योंकि एक ऑब्जर्वेटरी है और ये अभी फंक्शनल ऑब्जर्वेटरी नहीं है। ये बहुत पहले, ये 2003 साल तक ऑब्जर्वेटरी फंक्शनल हुआ करता था। फिर एक बहुत बड़ा बुश फायर हुआ, बहुत बड़ा फायर लगा आसपास जिससे पूरा ऑब्जर्वेटरी जल गया था 2003 साल में। उसके बाद जो भी यहाँ पे है वो बस जो एक हेरिटेज साइट के तौर पे है। जो डोम्स आपने बाकी जो डोम्स देखे छोटे छोटे या बड़े बड़े, वो सब बाहर से ही उनको रिपेयर किया गया है, उसके अंदर अभी टेलीस्कोप नहीं है। तो क्योंकि ये जगह पे बहुत ज्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली आग लगता है क्योंकि बहुत सूखा जगह है, तो ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया कि हम ऑब्जर्वेटरी कहीं और बनाएंगे। यहाँ पे दोबारा से ऑब्जर्वेटरी नहीं बनाया, बट एमसैट जो टेलीस्कोप्स हैं ये रिसर्च मतलब एस्ट्रोनॉमर्स के रिसर्च के काम नहीं आते उतने, ये स्कूल स्टूडेंट्स स्कूल प्रोजेक्ट के काम आते हैं। इसीलिए ये यहीं पे बना। जो पिछला वाला जो ऑब्जर्वेटरी था उनके रूइंस पे उनके जो रह गए थे जो अवशेष, उसी पे ये नया टेलीस्कोप बना। तो यही आप देख रहे हैं आसपास। और मैं ये बता दूं जिनको नहीं पता है, मैंने जो अपना पीएचडी किया है मैंने यहीं से किया है, तो मुझे बहुत याद आ रही है मेरे पीएचडी के दिनों की। ये जो माउंट स्ट्रॉमलो ऑब्जर्वेटरी है, यहीं पे मैंने लगभग 5 साल बिताया अपने पीएचडी रिसर्च करने के लिए। तो वहीं पे मैंने जेफ सर से मिला और इसीलिए हम अब सब देख पा रहे हैं वहाँ कैसा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कैनबरा को वापस देख के। Over to you, Geoff. Okay, thanks, Ian. You're doing a champion job, by the way, mate. Well done. Okay, let's go and have a look. You're making me miss Canberra. You're making me miss Stromlo. Oh, you'll just have to come back. We miss you too. All right. So here we go. This is the other of my babies. This is MSATT 2, and you may be able to see it's a larger telescope. It is entirely different from MSATT 1. They do entirely different things. When I was offered the funding for a second telescope, I didn't just want to build a copy of the first one. I wanted a telescope that would complement MSATT 1. And so that's what we've got here. And it's a larger telescope, but it's designed to give wider field views of the sky. So we'll just come around the back here, and you can see again that the telescope is actually 2 telescopes in this case, a very similar arrangement to MSATT 1, where you've got a larger telescope and a smaller one mounted on the back. And again, we attach different instruments to this. The students use the control computer here, which you can see. And in addition, just recently, I've set up workstations for students here to carry out work when they're not actually observing. And for the teachers, this is just something that I've done this year. I apologise for the camera work, by the way. I've never done this before, but there's a monitor. It's doing all right. So what I've set up is a chair and a monitor in here. Move back a bit so you can possibly see it. And that allows me to see everything that the students see while they're operating the telescope. But it also means I don't have to lean over their shoulder, which, you know, can be a bit intimidating when you've got a teacher leaning over your shoulder. So we've got a monitor here. I can watch everything that they're doing while they operate the telescope.
And they really appreciate the fact that I'm seeing what they're doing. They've told me it's really good because if they make a mistake, I can intervene straight away and say, well, hang on a minute, maybe not that, do something different. So it is very much a teaching facility. And as I said, the whole idea is that the students operate these instruments. So there you go. This is the other of my two. I call them my girls. I can't just call them machines. They have their own personality. They have their own characteristics. They're just like people in that sense. All right. So over to you, Ian. So जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये दूसरा डोम है, बहुत ही सिमिलर दिखता है. तो अगर आपको समझ में नहीं आया इन केस, तो पहले हम थोड़ी देर पहले जब हम स्टार्ट किए आज का सेशन, हम दूसरे डोम में थे. वो MSATT 1 था, ये MSATT 2 है. ये दूसरा टेलीस्कोप है, ये नया आया है, 2 साल हुआ है यहाँ पे आया है. और ये दिखना सिमिलर है, बट ये बहुत ही अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. इससे भी एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट करते हैं. स्कूल स्टूडेंट्स ही इसको ऑपरेट करते हैं. स्कूल स्टूडेंट्स ही इससे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं. बट इसका ये जो टेलीस्कोप है, ये दूसरे टेलीस्कोप से थोड़ा अलग है. इसमें वाइड एंगल व्यूज होते हैं, ज्यादा मैग्निफिकेशन के जगह एंगल वाइड होता है. बहुत ज्यादा स्काई कवरेज जो होता है, फील्ड ऑफ व्यू जो हम बोलते हैं, वो ज्यादा है इस टेलीस्कोप में. और इसमें भी दो टेलीस्कोप हैं, आप देख सकते हैं. ऊपर छोटा एक व्हाइट वाला टेलीस्कोप है, वो भी अलग इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है. तो ये जो अलग अलग टेलीस्कोप्स हैं, पिछले वाले डोम में हमारे पास 3 टेलीस्कोप देखे हमने. इस डोम में 2 टेलीस्कोप है अगर आप टोटल काउंट करें तो. ये हर टेलीस्कोप का अलग अलग अपना मकसद है, अलग अलग पर्पस है. हर टेलीस्कोप अलग अलग चीजों के लिए बना हुआ है. हर टेलीस्कोप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है. कोई टेलीस्कोप फोटो लेता है, कोई टेलीस्कोप स्पेक्ट्रम लेता है. जब स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात किए थे लास्ट वीक, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से होते हैं. और इस डोम के अंदर आपने देखा कि वर्क स्टेशन बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए. लैपटॉप, कंप्यूटर है, बैठने का जगह है. टीचर्स के लिए अलग सीट है, टीचर्स के लिए अलग. ये जो स्क्रीन जो दिखा रहे हैं जेफ अभी, तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स टेलीस्कोप में देख रहे हैं, टीचर्स स्क्रीन में बैठ के वो सेम चीज टीचर्स भी देख सकते हैं. ताकि वो, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स कुछ गलती कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, वो टीचर को भी ऐसे स्टूडेंट के बगल में आके टेलीस्कोप से नहीं देखना पड़ रहा है, वो अपने स्क्रीन में ही देख सकते हैं. तो एक सेम टाइम पे टीचर और स्टूडेंट्स जो है वो सेम चीज देख रहे हैं, जो भी आसमान में दिख रहा है, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये बहुत एक अच्छा सेटअप है. इसी सेटअप के साथ जेफ सर हर साल 25 से 30 बच्चों को प्रोजेक्ट कराते हैं. तो ये बहुत ही एक यूजफुल चीज है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि क्योंकि यहाँ पे ऐसे डिफरेंट वर्क स्टेशन है, अलग अलग कंप्यूटर्स है, और ये टेलीस्कोप भी अलग अलग है. तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टेलीस्कोप और सेटअप, जो कि जिसके बारे में जेफ जी और भी बताएंगे हमको. इकबाल, were you raising a hand? Yeah, I have a quick question for Geoff. Why are the 2 telescopes connected to one another? Like, are they optically connected and they have different filters, or they have their own optics but just aligned together mechanically? So you're talking about the big telescope and the small telescope mounted on the back. They're not actually connected other than just a mechanical connection. What we do is attach instruments to either telescope, depending on what the student project is. And, you know, the small white telescope that you can see on the back of this one can also act as a very large finder scope. So if I have a spectrograph attached to the main telescope and you wanted to find a very faint object, the white telescope on the back can be used as a finder scope. And so when you center an object in the smaller telescope, the object is also centered in the spectrograph in the main telescope. So yeah, quite versatile. There's different things you can do depending on what the student project is, but they're not actually connected optically or anything like that. They're just pointing at the same thing all the time. All right, thanks. No worries. Okay, so shall we go back to MSATT 1? Yes, please. Yep, okay. All right, here we go. As you can see, the weather is not being terribly kind to us at the moment. We've got lots and lots of cloud,
come over, which is unfortunate. But as mine pointed out to me a long time ago, we're here to observe nature. Some of the things that the students get up to. So let me get myself settled again. Just set that up there. Now what I'm going to try and do, Ian, is share this screen again. Hopefully this will work. And first of all, I'll just show you this. This is the software that actually controls the telescope itself. This is a program called the SkyX, and the student can do different, whoops, wrong one. There we go. So the students can select what it is that they want to look at. You can see here that I was looking at the moon earlier. There's different observing lists, so you can make lists of things that you want to observe. So if you've got 20 or 30 objects that you wanted to get data on, you can just program it all ahead of time and then go through one after another and observe them. And then there's controls for the telescope itself. Now, what I can do, even though it's clouded, what I can do is show the students at least how the telescope moves. So I'll just stop sharing again so that you can see the main view here. So hopefully you can see the telescope. What I'm going to do is just to get the telescope to go to what's called a home position. In order for MSATT to be able to find things in the sky, she needs to know three things. She needs to know, first of all, where she is on the Earth's surface, so longitude, latitude, and altitude. She needs to know the time, and we know the time down to 1,000th of a second here. But she also needs to know where she is physically in space, and that's what we're about to do now. So I'll just go through this startup process now, and you can see her move. I'll just take this opportunity to translate the bit that you just mentioned, Geoff. Yeah. So आप लोगों को देख सकते हैं कि ये टेलीस्कोप कैसे मूव हो रहा है. तो ये जो टेलीस्कोप है, ये ऑटोमेटेड टेलीस्कोप है. आपके पास जो स्कूल में जो टेलीस्कोप्स हैं, वो बहुत ही सिमिलर है, ऐसे ही टेलीस्कोप्स हैं, बट वो उसको हमको ऐसे अपने आप हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है ना. बट इसको आप ऑटोमेटिकली, ये जो सॉफ्टवेयर जेफ सर ने दिखाया हमको शुरू में, उस सॉफ्टवेयर में आप बोल सकते हो कि आप मून की तरफ पॉइंट करो, या फिर कि आप जो स्टार है वो स्टार की तरफ पॉइंट करो. तो ये सॉफ्टवेयर इतना ऐसे बना हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली टेलीस्कोप को घुमा के वहां जो ऑब्जेक्ट पे आप पॉइंट करना चाहते हो वो पॉइंट कर देगा. तो अभी जेफ सर ने हमको वही करके दिखाया. थोड़ा वो टेलीस्कोप को कंट्रोल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली. जो आपने देखा उसमें उनको हाथ भी लगाना नहीं पड़ा, राइट. ये जो सॉफ्टवेयर है उन पे वो स्टार्टअप क्लिक किए और ये टेलीस्कोप स्टार्ट हो गया. तो टेलीस्कोप को ये कैसे करता है, ये जो अपने आप जा रहा है वो कैसे जाता है, उसके लिए टेलीस्कोप का जो सॉफ्टवेयर है उसको तीन चीजें पता होनी चाहिए. पहली बात तो उसको पता होना चाहिए कि वो अर्थ में, मतलब धरती में कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड, मतलब कितना हाइट पे है, कौन से कंट्री में है, कौन से शहर में है, वो लोकेशन पता होना चाहिए. तो वो लोकेशन इनपुट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में. और फिर दूसरी चीज जो इनपुट करना पड़ता है वो है टाइम, कि कौन से साल के, कौन से दिन के, महीने के, कौन से दिन के, कौन सा टाइम, कौन सा सेकंड तक आपको वो टेलीस्कोप को, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा. उससे क्या होता है, उससे वो सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि अभी अर्थ में इस लोकेशन से, इस जगह से, इस समय आसमान कैसा दिखना चाहिए, कौन सा तारा कहाँ होना चाहिए, कौन सा प्लैनेट कहाँ होना चाहिए. सॉफ्टवेयर को वो पता हो जाता है, सॉफ्टवेयर एडजस्ट कर लेता है. तो एक बार वो पता हो जाता है, तब फिर जाके सॉफ्टवेयर को बस ये बताना पड़ता है कि ये टेलीस्कोप
फिजिकली कहाँ पे है, मतलब उसका ओरिएंटेशन क्या है, वो एकदम फ्लैट है कि थोड़ा टेढ़ा है, कि जो भी है वो उसको बताना पड़ता है। बस ये 3 चीज उसको जब पता हो जाता है, फिर आपको वो, आप उसको अपने मर्जी माफिक जो भी आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए बोलो, वो अपने आप घूम के, जैसे कि हमने अभी देखा, वो उस ऑब्जेक्ट तक पॉइंट हो जाता है। ऑब्वियसली अभी हम वो ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे क्योंकि जो डोम है ये खुल जाता है, ये अभी बंद है, इसीलिए आपको शायद लग रहा होगा कि ये कैसे दिख रहे थे, ये तो ऐसे काला दीवार नजर आ रहा है। वो जो दीवार है काले रंग का, वो खुल जाता है जब वेदर अच्छा लगता है, तब जब वेदर अच्छा रहता है तब जिस सर ये खोल देते हैं, जब बादल नहीं होते हैं, बारिश नहीं होता है, हवा ज्यादा नहीं चल रही होती है, तब ये खोल देते हैं, और तब जब टेलीस्कोप पॉइंट करता है तो आप वो चीज जो जो आप पॉइंट करना चाहते हो वो देख सकते हो। अभी बस जेफ सर ने हमको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसे उदाहरण के तौर पे वो हमको टेलीस्कोप ने मूव करके दिखाया, बट अभी हम डोम अभी तक तो खोल नहीं रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ही बादल छाया हुआ है, जैसे कि आपने देखा। Over to you, Jeff. Okay, thanks, Ian. All right, by the way, it's interesting. This software's, I'm not moving the camera at all at the moment. The software's got a mind of its own. It just keeps changing the angle of what it's looking at. All right, what I'm going to do now, hopefully, is, what am I after? So now, can you see the MSATT logo, or do I need to reshare the screen or something? You'll have to share the screen again. Reshare the screen. All right, hold on a second. Yeah, you can tell this is my first time using Zoom. Thank you, which is why even we are all the more grateful to you for doing this. No, I'm learning too. That's one thing I say to the students: if you ever stop learning, it's game over. You always need to keep learning. The only problem is that, here we go. That's what I'm looking for. Right, now we're in business. All right, so you should be able to see the MSATT logo now. Yep, now we do. Okay, all right. So what I'll do is I'll just run through a number of images to show you, or show the kids, the sort of projects that students can do up here. And these are in no particular order. So what you're looking at here is sunspots. So we do solar observing up here. All of these images, by the way, were taken with either MSAT-1 or MSAT-2. There's no fake images or anything. These are all images that have been taken with these instruments. So this was actually taken with MSAT-1, a high resolution image of a sunspot group, but this was taken with the gold telescope you may remember seeing on the back of MSAT-1. This is looking at the sun through a very particular wavelength of light called hydrogen alpha, and it allows us to see a lot more detail on the surface. Ian, do you want to translate each image as we go? That'd be better. That would be better. That's exactly what I was going to suggest. Thanks, Jeff. तो ये जो हमने अभी इमेज देख रहे हैं, ये सारी इमेजेस जो है ये एमसैट टेलीस्कोप से ही लिया गया है, स्टूडेंट्स द्वारा लिया गया है, क्लास 9 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स द्वारा। तो ये पहला वाला जो इमेज है ये सनस्पॉट है। सनस्पॉट के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो हम अगले हफ्ते थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आई एम श्योर किसी को आपको तो डेफिनेटली पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको हम बाद में समझा देंगे। बट ये सन जो है, सन का बहुत ही जूम, बहुत ही क्लोजअप एक फोटो है जहां पे भी ऐसे स्पॉट्स दिखते हैं। और अगला फोटो में भी, जेफ इफ यू कुड प्लीज गो टू द नेक्स्ट इमेज, थैंक यू। ये भी सन का फोटो है। एमसैट में जो सुनहरे कलर का जो टेलीस्कोप था छोटा सा, उसी से लिया हुआ ये फोटो है। ये एक बहुत ही पर्टिकुलर वेवलेंथ, हम वेवलेंथ के बारे में बात किए थे लास्ट 2 हफ्ते, बहुत ही पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर बहुत ही पर्टिकुलर एक कलर में ही ये इमेज लिया गया है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन अल्फा। इसका मतलब है सन में जो हाइड्रोजन है वो इस कलर में रोशनी एमिट करती है, रोशनी छोड़ती है, और उस रोशनी को कैप्चर अगर हम कर पाए, उस रोशनी से अगर हम फोटो ले पाए तो वो ऐसे दिखेगा। तो ये सन का ही फोटो है। यहाँ पे जो आप ऐसे जो पैटर्न्स देख रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है कि कुछ धब्बा धब्बा टाइप है, वो सन में जो
बहुत सारी चीजें हो रहा है सन के सरफेस में, वो उबल रहा है बेसिकली। जैसे जब चीज उबलता है उसमें बहुत ही ऐसे बबल्स क्रिएट होते हैं, बस समझ लीजिए वैसे ही कुछ हो रहा है जो सन है उसके सरफेस में, उसके ऊपर। तो वही चीज हमको फोटो में दिख रहा है, जो कि ये एमसैट टेलीस्कोप द्वारा लिया गया है। Okay. This is a very wide-angle shot of the moon. Anybody that knows me knows that the moon is my speciality. I'm just absolutely fascinated with the moon, and have been since I was younger than you guys are at the moment. And I think part of it is that when you look at the moon and are able to study the moon, and not only wide-angle shots like that, but also images like this one here, you can actually study another planet up close. It's not like you're looking at it from a very great distance. It's not like you are having to rely on spacecraft and so on. You're looking at it yourself, and I just find the moon fascinating. Having said that, I have heard that most astronomers don't regard anything in astronomy to be closer than the moon. I mean, the moon is just, no, that's too close to the Earth. You've got to look deeper into space. But I can tell you, when people, including astronomers, want to set up observatories on the moon, I know who they're going to come running to and learn all about the moon. They're going to come to people who study the moon. So that's just my little plug for lunar studies. But we also study Mars. I'll just quickly go through. Oh, do you want me to pause there, Ian? Or? Do you think, what do you think would be better? Do you think it would be better if we do all the objects and then I can, but then in that case, you'd have to cycle back to the images. So whichever way you feel. I basically said all I was going to say about the moon. So maybe if you just cover that, and then we'll cover the remainder in much more briefly. I'm conscious of the fact that these kids have been immensely patient, and I don't want to tax that too much. They are also immensely enthusiastic, but thank you for your explanation. Okay, I'll just quickly summarize this. तो ये जो आपको पता ही चल गया, ये मून का जो इमेज है, पहला वाला जो इमेज दिखा है वो मून का एक वाइड एंगल शॉट था, जो कि आपने भी लिया हुआ है। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी मून के बहुत सारे फोटोज लिए हुए हैं जो आपने हमारे साथ शेयर किए थे, जो आप अभी भी अपलोड कर सकते हैं। जो अपलोड करने का लिंक जो था वहां पे अपलोड कीजिए, वो हम जेफ सर के साथ शेयर करेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि हम भी हमारे टेलीस्कोप से मून का फोटो ले सकते हैं। और ये जो अभी इमेज आप देख रहे हैं, ये भी मून का इमेज है, बट ये बहुत ज्यादा जूम्ड इन, बहुत ज्यादा मैग्निफाइड इमेज है। इसमें आप देख रहे हैं मून का एक क्रेटर और उसके अंदर एक हिल, एक माउंटेन है, वो दिख रहा है। और ये पूरा चीज स्पेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ा, बहुत बड़ा टेलीस्कोप का भी जरूरत नहीं पड़ा। जो टेलीस्कोप आप देख रहे हैं जेफ सर के पीछे, उसी टेलीस्कोप से ये इमेज लिया गया है, ये फोटो लिया गया है, जहां पे आप मून का जो हर एक इंडिविजुअल क्रेटर है, इंडिविजुअल जो गहराइयां हैं और जो ऊंच नीच का जो ऐसा उसका जो सरफेस है, वो पूरा आप एकदम बारीकी से एकदम डिटेल में देख सकते हैं। इसमें जो शैडो आके गिर रहा है, जो लाइट है और शैडो है, वो शैडो का डेप्थ अगर आप मेजर करें, यहीं पे बैठ के, वहीं पे टेलीस्कोप के पास बैठ के आप मेजर कर सकते हैं कि वो जो गहराइयां हैं या फिर जो ऊंचाइयां हैं, उसका हाइट कितना है, वो शैडो मेजर करके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, जो कि करते हैं जेफ सर के स्टूडेंट्स वहां पे। तो यही वो हमको दिखाना चाह रहे हैं। और आगे भी हम और भी सारे इमेजेस देखेंगे बाकी ऑब्जेक्ट्स के। तो ये था मून, आगे हम बाकी प्लैनेट्स के भी इमेजेस देखेंगे, जो कि सारा एमसैट टेलीस्कोप से लिया गया है। Okay, all set? All right. So we also do planetary imaging. So this is Mars, taken with MSATT-1. Now, believe it or not, there is in fact a dwarf planet in this picture. But the problem is that these dwarf planets, they only look like stars, even through the best ground-based telescopes. And the only way to tell them apart is to wait for them to move. So here's an image of the dwarf planet, and all of those dots, other than the dwarf planet, are background stars. But if we take an image a number of hours later, and I'm just going to go backwards and forwards, so perhaps Ian, you can explain what I'm doing here as I go backwards and forwards. They might just be able to see that one of those star-like objects has moved, and that's the dwarf planet Ceres.
Yeah, I will explain that really quickly. तो जैसे कि आपने देखा, तो ये जो है पिछला वाला जो इमेज था वो मार्स का इमेज था, वो भी इमसेट से जेसर ने लिए है। और ये जो है, ये इमेज में हमको जो भी चीजें देख रहे हैं, ज्यादातर सारे चीजें स्टार्स हैं, जो से नॉर्मल स्टार्स जो आसमान में दिखते हैं। बट इसमें एक चीज है जो स्टार नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। मतलब वो एक बहुत ही छोटा सा ग्रह है, ग्रहाणु भी बोलते हैं हम कभी कभी उसको। तो वो ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि दिखने में तो हर चीज स्टार जैसा लगता है। तो इसीलिए जेस सर क्या कर रहे हैं, तो एक स्काई का एक ही पार्ट का फोटो एक बार लिया, और फिर थोड़ी देर वेट करके, कुछ घंटे वेट करके उसी पार्ट का फोटो दोबारा लिए। तो स्टार जो होते हैं वो मूव नहीं करते उतना आसमान में, है ना। बट ये प्लैनेट जो होता है वो मूव करता है आसमान में, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो एक ही जगह का फोटो अगर हम थोड़े देर के अंतर में दो बार लेते हैं और उस फोटो में हम कंपेयर करते हैं, तो ऐसे आगे पीछे, तो व्हेन जेफ इज गोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन दिस फोटो, तो उसमें हमको ये सेंटर में आप देख सकते हैं, एक लगता है एक नया स्टार आ गया, राइट। ये जो आप आगे पीछे करेंगे देखिए एक दूसरा स्टार आ गया लग रहा है, जो कि पहले फोटो में नहीं था। तो वैसे पता चलता है कि ये एक स्टार नहीं है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। ये अपना जगह बदल लिया, जैसे कि समय बदल गया, कुछ घंटे बीत गए तो ये चीज जगह बदल ली। बाकी जो सारा चीजें है वो फिक्स्ड है, वो वहीं के वहीं थे। ये एक छोटा सा तारा जैसा चीज वो जगह बदल रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, तारा क्यों जगह बदलेगा, तो उसका मतलब वो तारा नहीं है, वो एक प्लैनेट है। और इन दिस केस वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इसका नाम है सेरेस। तो ऐसे करके आप एमसैट से या फिर इस साइज के टेलीस्कोप से ड्वार्फ प्लैनेट का भी फोटो ले सकते हैं। ये सब फोटो आप अपने टेलीस्कोप से जो आपके पास है स्कूल में है उससे भी ले सकते हैं। बट वहां पे दिक्कत ये है कि आपको एग्जैक्टली आसमान का सेम जगह का फोटो, एग्जैक्टली सेम जगह का फोटो 2 बार लेना पड़ेगा कुछ घंटे के अंतर में। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे वो चीज इजी है क्योंकि ये टेलीस्कोप ऑटोमेटेड है। तो आपके पास जो देवेंद्र जी के पास जो ऑटोमेटेड टेलीस्कोप है उससे भी आप ऐसे चीज कर सकते हैं। सेम फोटो 2 बार लीजिए कुछ टाइम के बाद और देखते हैं, कुछ देखें उस फोटो में कुछ मूव हो रहा है कि नहीं, कुछ हिला कि नहीं। अगर कुछ हिला उसका मतलब वो स्टार नहीं है, उसका मतलब वो प्लैनेट है। और while we are at this, I got a question about the moon images. So I'll quickly clarify that. The question was, how are we shining light on the moon? How can we see the shadows so clearly? So I'll answer in Hindi so that the rest of us can understand. तो ये सवाल एक है कि ये जो मून में जो लाइट शाइन कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना दाएं तरफ से लाइट आ रही है इसलिए शैडो क्रिएट हो रहा है, तो वो लाइट कहाँ से आ रही है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि ये जो लाइट है वो लाइट है सन की। मून जो हम देखते हैं, मून हम देख पाते हैं बिकॉज सन से जो लाइट है वो आके मून से टकराता है और फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमारे तरफ, मतलब धरती की तरफ आता है। तो जब भी हम मून को देखते हैं, चाहे वो खुली आंख से देखते हैं, चाहे वो टेलीस्कोप से देखते हैं या कुछ भी से देखते हैं, जो लाइट मून पे गिर रहा है वो सूर्य के लाइट है, वो सन का लाइट है। तो ये जो लाइट है वो सन का लाइट उस एंगल से आ रहा है, इसीलिए वो जो शैडोज है, जो क्रेटर या माउंटेन जो है उसका वो दिख रहा है। Okay, I think that answered the question. Please feel free to go ahead, Geoff. No worries. Okay, so hopefully the kids saw that's actually the dwarf planet there. So that's the dwarf planet Ceres. Okay, the planet Jupiter, and you can see one of its moons, Io, here, and there's the great red spot just on the edge, what we call the limb of the planet there. Everybody should recognize this one. Saturn. Now, one of the things that I need to mention, by the way, is that throughout the 5 years that MSATT's been operating, there has been one consistent trend, and that is we're getting better at what we do all the time. So we're now able to do much better work than this. Now, one of the areas that's important is an area called spectroscopy. And this may need a little bit of explanation for the kids, Ian. But what we've got here is an image of a very famous double star called Alpha Centauri. It's actually the closest star to the Earth other than Proxima Centauri, or the Sun for the purists out there. And what we have over here are the spectra. So a little bit of the light taken from the star
broken up into its colors. And from that spectrum, we can run that through software like this. This is a program called RSpec. We can examine the spectrum and produce a spectrogram like this here. And one of the things that we've been able to do is really get quite good at it. This is with our new spectrograph, or actually the next and newest spectrograph that we've got. So this is ION's got a resolution of 600. The new one's got a resolution, an R value of 2000. So we're actually sort of nudging into professional regions. That is professional. But what I've done here is just labeled the absorption lines. This is from the brightest star in the Southern Cross. And I've labeled these absorption features that tell us what elements and compounds are in the star. So I don't know if you want to cover that concept with them briefly. Yeah, absolutely. We have just actually been talking about spectrum and absorption emission starting last week. We will go on to do that next week as well. So I think it's perfect timing. But before that, I just want to say this looks amazing, Geoff. The fact that you're getting such high resolution spectra, or like stellar spectra, that's just, it's just mind blowing. Okay, so I'll just quickly summarize. So जेफ जी ने हमको दिखाया कि जो जुपिटर और सैटर्न के फोटोज तो हम देखें, वो हम खुद भी देख चुके हैं, आप लोग भी देख चुके हैं टेलीस्कोप से जुपिटर और सैटर्न कैसे दिखते हैं, तो वो तो है ही। उसके अलावा भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, जिसके बारे में हम लास्ट हफ्ते बात करना चालू किए थे, हमने पूरा कवर नहीं किया, हम अगले वीक उसको कवर करेंगे और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बट ये जो स्पेक्ट्रम है, जो आप लोगों को याद होगा, जिन अपने से जो भी लास्ट हफ्ते थे यहाँ पे क्लास में, कि वो जो स्पेक्ट्रम है जहाँ पे हम एक एक्स एक्सिस में वेवलेंथ या कलर रहता है और वाई एक्सिस में रहता है कि वो कितना पावर है, कितना इंटेंसिटी है उस कलर में, वो ऐसे जाके कुछ एक प्लॉट बनता है, कर्व बनता है, तो वही चीज, उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, याद होगा आपको। तो उसी चीज को हम कोई भी एक स्टार का स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? जो स्टार आपने देखा, जो डबल स्टार सिस्टम है, जो थोड़ी देर पहले 2 इमेजेस पहले जब दिखा रहे थे। Geoff, if it's possible for you, can you please go back 2 images for the with the double star image and the, yeah, thank you so much. तो आप लोग देख रहे हैं, इनमें जो राइट साइड पे जो 2 व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं, वो एक्चुअली स्टार है। वो एक्चुअली 2 स्टार्स हैं अलग अलग, वो 2 स्टार बहुत ही नजदीक है एक दूसरे के, और इस स्टार का नाम है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी आपको पता होगा कि हमारे सन से सबसे नजदीक का स्टार है, वो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक का स्टार है अल्फा सेंटोरी। तो अल्फा सेंटोरी पे जब एमसैट को अब फोकस करते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, मतलब उससे जो लाइट निकल रहा है उसको आप उसके जो सारे रंग है वो रंग में आप उसको बिखर देते हैं। जैसे कि अब लाइट जब प्रिज्म या फिर कोई कांच के थ्रू जाता है, वो ऐसे इंद्रधनुष जैसा बन जाता है, वही सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे सन के लाइट के जगह वो स्टार के लाइट से हम इंद्रधनुष बना रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट में, राइट, नील से जैसे नील, लाल, हरा, पूरा जो कलर है वो दिख रहा है। एंड इफ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, फिर हमको दिखेगा कि ये वो जो स्पेक्ट्रम लेके अभी आपको दिख रहा है राइट साइड पे जो रेड कलर का जो प्लॉट है, वही चीज हम लास्ट हफ्ते बात कर रहे थे, लास्ट वीक, है ना, कि ऐसे वेवलेंथ है और ऐसे इंटेंसिटी है कि कौन सा वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा है उसका पावर, कौन सा वेवलेंथ पे कम है। तो ये वेवलेंथ पे जहां पे पीक है, उस पीक से हमको क्या मिलता है? उस पीक से हमको उस चीज का टेम्परेचर मिलता है, वो कितना हॉट है, इसी बारे में हम लास्ट हफ्ते बात किए थे। तो एग्जैक्टली यही चीज आपको आज एकदम रियल टाइम में देखने को मिल रहा है कि कैसे हम स्टार्स जो है, तारे जो है, उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं और उसके स्पेक्ट्रम का कहाँ पीक होता है, कौन से वेवलेंथ पे, कौन से कलर पे, उसको हम बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। बस यही नहीं, इफ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, देन वी कैन सी कि इसमें जो ऐसे डिप है, इसमें जो ऐसे नीचे जा रहा है, ये कभी ऊपर जा रहा है, इसको हम एब्जॉर्प्शन लाइन, एमिशन लाइन ये सब बोलते हैं। ये हमने अभी तक कवर नहीं किया है, ये हम नेक्स्ट वीक हमारे क्लास में कवर करेंगे कि एब्जॉर्प्शन लाइन होता क्या है, एमिशन लाइन होता क्या है। बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये जो एब्जॉर्प्शन, एमिशन, ये जो लाइंस होती है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है,
इससे हमको पता चलता है कि उस स्टार के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। उस स्टार के अंदर, जैसे कि इस स्टार के अंदर आप देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, सोडियम है। अगर आपको, आप में से जिनको ये जो केमिकल फॉर्मूला आता हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस स्टार में जो हीलियम है, हाइड्रोजन, सोडियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उस एलिमेंट्स वो कितने मात्रा में है उस स्टार के अंदर, तो वो हम पता कर सकते हैं। ऐसे स्टार के लाइट को इंद्रधनुष जैसे अगर स्प्रेड करें, अगर स्पेक्ट्रम बनाएं, तो ऐसे ऐसे हमको ये पता चलता है। तो ऐसे ही चीजें हम भी करेंगे हमारे क्लास में। ये स्पेक्ट्रम हम आपको देंगे, ऐसे ही एक स्पेक्ट्रम हम देंगे जो कि आप लोग सब जाके मिनी एक थोड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हो इस कोर्स के अंत पे। और ये सेम चीज होगा। और जेफ सर के जो स्टूडेंट्स है वहां पे कैनबेरा में, वो भी ऐसे सिमिलर चीज करते हैं। वो भी सेम चीज, वो भी इसी स्पेक्ट्रम को लेके वो भी मेजर करते हैं कि उस स्टार में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, वगैरह वगैरह। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां पर स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, आप भी वही करेंगे। और आपको भी हम लोग एक स्पेक्ट्रम देंगे, सिखा देंगे हम आपको कि कैसे करते हैं मेजर ये चीज, और उसके बाद आप खुद कर पाएंगे। I think Ankita raised her hand. Ankita, did you have a question? Yeah, this is very fascinating. I have a quick question, and again, it might be ignorance about these things. How do you make sure that you don't collect any other stray light? Like, how do you make sure that you're collecting a light from a particular planet or whatever object you're focusing on? Yeah, look, there's two answers to that. One is you don't actually avoid getting light from background sky, for instance. But what we can do with the software is subtract that background light from the spectrum. So this is in its simplest form. What we've got between these two orange lines here, the software is just being told, just measure the intensity between those two lines. And so you've got the brightness of the star here, that's that big peak over on the left. And then you've got the varying intensity of the spectrum along here, portrayed by this graph here. But of course, that includes a lot of background sky as well. I haven't got it checked at the moment, but that little button there, you can tick that, and the software looks at the background light and subtracts it from whatever's in between the orange lines, leaving you with just the star itself. But we've since moved on considerably since then, and I've just dragged out this to show you if I can get the software to take a picture. This is actually our latest toy. This is our new spectrograph with an R value. That's the 2000. 2000. Predictably, it's been quite clouded since I've got this. I haven't actually had much of a chance to commission this yet, but it's using its little brother that we're able to do this now. So this is the second answer to Ankita's question, in that with an instrument like this, we can actually get just the light of the object through a very tiny slit. It's about 25 microns across, and just that light goes into the spectrograph and is then analysed by the software. So there's two answers to it, but yeah, it's a problem, but there are solutions to it. Thank you so much. That's pretty cool. Yeah. Okay, we're right to go on, I am? Yes, I think these kids must either be asleep or climbing the walls. They must be so patient, these kids. My hat goes off to them, and their teachers. So anyway, that's just another spectrum. We'll leave that one there. Now, the other sort of observation that we can make with MSATT is what's called photometry. And photometry is just measuring the brightness of things. And this is a plot of an eclipse of a binary star. And so what happens is, if you've got, I'm going to try and do this to the camera without the software, you can see that movement of the image, by the way. That's not me, that's the software. It's doing very strange things. So imagine two stars going around each other, but they're so far away in space that you can't see them as two stars. You only see them as one. So it's kind of like looking at car headlights from a very great distance. If they're far enough away, the two lights just look like one. Now, when the two stars are side by side,
they will have one brightness. As they orbit around each other, if one goes behind the other, the brightness will drop. And then as, there goes that camera again, as the two stars move side by side again, the brightness goes up. And that's exactly what's happening here. This occurred over several hours, and each dot is a measurement of the brightness. So this is when the two stars are side by side. This is when they're in eclipse, one behind the other, and this is when they're side by side again. And the students can make observations like this and then write computer code to work out the orbital parameters of the star. In other words, just how are these two stars orbiting around each other from data like this. That's amazing. I'll just quickly go ahead and summarize the binary stars, which you explained so nicely, Geoff. तो इसमें क्या है, ये भी एक अलग तरीके का प्रोजेक्ट है जो वहाँ के स्टूडेंट्स और जेफ सर मिलके कर रहे हैं एमसैट से. ये है बाइनरी स्टार जो होते हैं उनके ऑर्बिट मेजर करने के लिए. तो बाइनरी स्टार होते हैं जो इसमें दो स्टार्स होते हैं मान लीजिए, और वो दो स्टार्स इतने दूर है कि हमको वैसे दो अलग अलग नहीं दिखते हैं, हमको दिखते हैं दूर से कि जैसे कि वो एक ही स्टार है. जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी का अगर हेडलाइट है वो बहुत दूर है, तो गाड़ी का जो दो हेडलाइट्स है, दो अलग अलग लाइट है, अगर गाड़ी बहुत ज्यादा दूर है तो हम उसको दो अलग अलग लाइट शायद नहीं देख पाएंगे, हम उसको एक लाइट देखते हैं. जब वो नजदीक आता है फिर हमको लगता है, फिर हमको पता चलता है कि वो दो अलग लाइट है. तो इसी तरीके से जो स्टार्स होते हैं बहुत दूर होते हैं, तो कभी कभी जो दो स्टार्स इतने पास होते हैं तो कि हमको वो दिखते नहीं है कि वो दो अलग अलग स्टार है, हमको दिखता है वो एक चीज है. बट ये दो स्टार्स जो है वो अपने आप को और आपस में वो एक दूसरे के आसपास घूमते रहते हैं. तो उससे क्या होता है, जब ये दो स्टार्स साइड बाय साइड है, एक दूसरे के बगल में हैं, तो दो स्टार्स से ही हमको लाइट मिल रही है, तो वो सबसे ज्यादा लाइट होती है. फिर मान लीजिए घूम के एक स्टार दूसरे स्टार के पीछे चला गया, तब जो लाइट मिलता है हमको ये बस सामने वाले स्टार का लाइट दिख रहा है, तो मतलब हमको कम लाइट दिखता है. और फिर थोड़ी देर बाद ये स्टार घूम के जब इस तरफ आ गया, फिर हमको दोबारा दो स्टार्स दिखने लगे, और फिर दोबारा हम दोनों स्टार्स की लाइट हमको मिलता है, मतलब ज्यादा लाइट मिलता है. तो ये जो ब्लू का जो चित्र देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है, वो वही है कि ये जो दोनों स्टार जो बाइनरी हम बोलते हैं, दोनों स्टार का जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से अगर हर टाइम में हम अगर वो स्टार का जो ब्राइटनेस है, जो लाइट है, वो मेजर करते जाए, तो कभी कभी हम देखेंगे वो ब्राइटनेस कभी ज्यादा है, कभी घट गया, फिर वापस से ज्यादा हो गया, फिर वापस थोड़ी देर बाद वापस जब ये स्टार घूम के पीछे चला जाएगा, फिर वापस घट जाएगा. तो इससे पता चलता है कि उसमें दो स्टार्स है, और इससे ये भी पता चलता है कि वो स्टार्स कितने जल्दी एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं और कितने बड़े हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो दोनों स्टार्स के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे चीजें हम मेजर कर सकते हैं एक बहुत ही सिंपल ऐसे एक ऑब्जर्वेशन से. हमको बस उस स्टार को देखना है और हर टाइम पे देखते जाना है, एक मान लीजिए 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद देखते जाना है, और वो हम फॉलो कर सकते हैं कि वो ब्राइटनेस जो है वो गिरता है कि बढ़ता है, और उसी से हम बहुत सारे चीजें मेजर कर सकते हैं. इसमें जो आप देख रहे हैं, इकबाल ने क्वेश्चन पूछा, ये जो एक्स एक्सिस में, मतलब ये जो नीचे जो टाइम का जो एक्सिस है, उसमें जो यूनिट्स हैं उसमें JD लिखा हुआ है. JD का मतलब है जूलियन डे. वो एक टाइम का यूनिट होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो बहुत एक पर्टिकुलर टाइम से कितने सेकंड्स हैं वो सेकंड्स काउंट करके होता है, इसीलिए थोड़ा अजीब सा बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं इसमें. बट मोर और लेस आई थिंक ये कुछ ही मिनट का फर्क है एक ऑब्जर्वेशन में, कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड्स का फर्क है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में. तो हर जो ब्लू डॉट आप देख रहे हैं, वो एक ब्लू डॉट और दूसरे ब्लू डॉट के बीच में कुछ ही मिनट या सेकंड्स का फर्क. I think that was it. I think Geoff, quickly go ahead. All right, so another thing that we do is take images of galaxies, and as I said before, one of the characteristics of MSATT is we're getting better at taking images like this all the time. This is one of our later ones. This was taken with MSATT 2, and if I zoom in a little bit, you can see that we're actually starting to get some pretty good detail in this. Not perfect, but it's better than what we were before. And as I say to the kids here and anywhere, in fact, the whole idea is that you're better than you were yesterday.
And we're getting better than we were yesterday, and that's what I want for MSAT. So we're producing some nice images like that now. This is an image of the Carina Nebula. Again, this was taken with one of the smaller telescopes, the small white ones, not the big one, the Lagoon Nebula. But this is one of our most recent images. This was taken with MSAT-2. But one of the things that the students should note is this image, the colors are all completely fake. This is not the color of the Eagle Nebula. The color of the Eagle Nebula is a nice pink color, and that's because of the hydrogen. The people who process images from the Hubble Space Telescope, and more recently, good grief, I've forgotten the name of the latest one. I've got one of those mental blanks. James Webb, good grief, how could I forget that name? The images are coloured to make them look pretty. And that's because most things in the universe are made up of hydrogen, which means they're all pink or a red colour. So I just need to know that. So anyway, that brings us to the end of the presentation. That's just a bit of a thumbnail sketch of the sorts of things that we do. But one of the things that I'd really like to emphasise to your students, the ones that are joining us now, is, as you know, it's one of my dreams that maybe one day we can get them operating MSAT. MSAT was built to be used by students, not to simply look impressive. I mean, she is impressive. She's a beautiful scope. So is MSAT too. But they were both built for students to use, and it is a deep wish of mine, as it would be for any teacher, to have students in another country operating MSAT remotely. And I think that's something that we can do one day in the future. Yeah, absolutely. Yes, I will definitely convey that. So जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट फ्यू जो इमेजेस जेफ सर ने दिखाए हमको, उसमें से पहला एक गैलेक्सी का इमेज था। वो हम हमारे शुरुआत के कुछ हफ्ते में हमने भी कुछ इमेजेस शेयर किए थे, कुछ फोटोज दिखाए थे आपको कि गैलेक्सी कैसा लगता है, नेबुला कैसा लगता है। नेबुला मतलब जहाँ पे स्टार्स पैदा होते हैं, वो कैसे लगते हैं। जेफ सर ने हमको करीना नेबुला का फोटो दिखाया है, और इसमें अभी जो है हमारे स्क्रीन में, उसमें हम जो पिलर ऑफ क्रिएशन है, जो उस नेबुला का एक पार्ट है, उसको पिलर ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, उसका नाम ऐसा है। तो ये नेबुला का हम फोटो देख रहे हैं। ये सारे जो इमेजेस हैं, ये सारे एमसैट, आई थिंक ये जो नए इमेजेस हैं, ये MSAT-2 टेलीस्कोप से लिया गया है, जो दूसरा वाला जो डोम है, जहाँ पे थोड़ी देर पहले जेफ सर ने हमको दिखाया था। तो ये दोनों जो टेलीस्कोप्स है, जो MSAT-1 है, वो एकदम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को देखता है, एकदम स्टार्स को देखता है या प्लैनेट्स को देखता है। और MSAT-2 जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा, उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब उसका जो देखने का जो एरिया है, वो थोड़ा ज्यादा है, वो थोड़ा बड़ा है। इसलिए वो स्पेसिफिक एकदम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखता है, वो थोड़े बड़े चीजों को देखता है, जैसे कि गैलेक्सी या नेबुला। तो उसी चीज से ये जो इमेजेस लिया हुआ है। इसमें एक चीज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फोटो में जो आप कलर देख रहे हैं, वो कलर असली नहीं है, वो कलर फेक है, वो कलर नकली है। नकली का मतलब ये है कि जो अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग फिल्टर्स बोलते हैं हम, उसमें फोटोज लिया गया है, और हर एक फिल्टर का अपना अपना रंग किसी ने चूज किया। कोई भी एक स्टूडेंट जिन्होंने ये फोटो बनाया, इस ऑब्जर्वेशन किया, ये जो डेटा लिया, उसी ने अलग अलग कलर को उसके साथ जोड़ा, और जोड़ के एक ऐसे हरा, लाल, नीला, जो एक अच्छा दिखने वाला फोटो क्रिएट हो रहा है, वो ऐसे बनाए ताकि वो अच्छा दिखे। बट एक्चुअल में जो कलर है ये करीना नेबुला का, वो है बहुत ही लाल तरह का कलर है। जैसे कि हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो इसी सेम चीज का फोटो दिखाया था आपको, शायद याद होगा, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले। तो वो बहुत ही लाल दिखता है एक्चुअल उसका कलर, क्योंकि उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के लिए लाल हाइड्रोजन गैस जो होता है, वो लाल रंग में बहुत ज्यादा रोशनी देती है। तो इसीलिए ये सब नेबुला का जो कलर है, वो काफी हद तक लाल कलर के जैसा होता है। तो ये कलर थोड़ा बनाया हुआ है एक आर्टिस्टिक ढंग से, इसलिए यहाँ पे हमको इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं। और जेफ सर ने ये भी बोला कि उनका ड्रीम है
उनका ये ख्वाहिश है कि एक दिन हम सब, मतलब हम आप लोग जो इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो घर पे स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट जो ये रिकॉर्डिंग को बाद में देख रहा होगा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो ये एमसैट जो टेलीस्कोप है उनके साथ कोलैबोरेट करें। कभी आज अभी नहीं हो पा रहा है, बट होपफुली हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में हम आप लोगों को ऐसे एक प्लेटफॉर्म दें ताकि आप लोग वहीं पे बैठ के, इंडिया में बैठ के, रिमोटली, मतलब इंटरनेट के थ्रू वो जो एमसैट टेलीस्कोप है उसका सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सके, वो टेलीस्कोप कंट्रोल कर सके। तो जैसे कि कैनबरा के स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स वो टेलीस्कोप यूज करके ऐसे ऐसे फोटोज ले सकते हैं, आप भी इंडिया में बैठ के, क्योंकि ये पूरा चीज सॉफ्टवेयर में चलता है। आपने देखा कि सॉफ्टवेयर में जेफ सर ने 2-3 कीज दबाए और टेलीस्कोप अपने आप मूव हो गया, अपने आप पॉइंट करने लग गया। तो ये सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से दूर बैठ के भी करना मुमकिन है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन आपको ये मौका दे कि आप कहीं पे भी हो, इंडिया में भी हो, तो भी आप ये जो कैनबरा में जो टेलीस्कोप है वहीं से बैठ के आप ऑपरेट करें, वहीं से बैठ के आप वो टेलीस्कोप घुमाएं, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट आपके उसका आप स्पेक्ट्रम ले, उसका आप फोटो ले, चाहे वो मून हो, चाहे वो नेबुला हो। तो आशा करते हैं कि हम बहुत जल्दी ये कर पाएंगे, और जब हम ये कर पाएंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा हमको जो है इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको परमिशंस की जरूरत है, बट होपफुली ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको करने में। और जब हम ये चीज पूरा करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तब डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप सब लोग वापस हमारे साथ जुड़े, और ये जो अपॉर्चुनिटी है जो जेफ सर हमको देने के लिए तैयार है, जो जेफ सर भी चाहते हैं कि एक दिन बाहर के देश में, ऑस्ट्रेलिया के बाहर के देश के स्टूडेंट्स इंटरनेट के थ्रू उनके टेलीस्कोप यूज करें और अपने आप अपना ऑब्जर्वेशन ले, अपना फोटोज ले उस इमेज, उस टेलीस्कोप से। तो ये हम आशा करते हैं कि एक दिन ये बहुत जल्दी मुमकिन होगा। और आज तक यहाँ तक ही था जेफ सर का जो प्रेजेंटेशन था, जेफ सर को जो बोलना था, जो हमारे साथ जो शेयर करना था। So I think this is it for Hello. today, but we will see if Sweta is here. So I'll Hi. quickly, Hi. I'll quickly introduce Sorry, you. I have I'll been quickly traveling, so I'm in the airport, so I'm kind of not going to No, take the that's- call. But that's fair. yes, how was the session? It was amazing. Jeff is still here with us. So Jeff, Sweta Hi, is the Jeff. other co-instructor. So me and Sweta are basically, so we are the two astronomers here. She's also a postdoc in UK. So we are the two people who actually try and do the teaching bit, and the rest of the OFC team members, on-sky team members, they definitely help us with the logistics and the website and the storage space and everything, and obviously the encouragement. But I was wondering if you could, if I would be able to introduce Sweta to you. We have conversed via email, obviously, and Sweta is traveling today. I think she's in the airport right now. You just said. So thank you for Yeah. joining from the airport. Yeah, absolutely. I mean, yeah. And hello, can you Yeah. Yes, we can hear you. can you? Hi. And also, Yes. Yeah. Hello. Yes. I hope the session was really good. I kind of was at like a mess with my flights. So, anyways, I will look at the recording and I will write to both you and Jeff about it once I look at the recording. And it's really good that you guys had the session and you saw MSAT online, I guess. Sorry. She's asking if we saw MSAT online. We saw. Oh yes, we did. Nice. Hi, Ankita. Okay. All right. I'm going to log off because Sure. I'm also. Good luck with your travels. Thank you. Bye. Bye, Shweta. बाय बाय। हाँ, तो आज के लिए हम हमारा यहीं तक था। तो अभी हम ऑलरेडी थोड़ा लेट चल रहे हैं, बट अगर आप में से किसी को कुछ सवाल पूछना है जेफ सर से, या फिर कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी बोलना है कि आपको कैसा लगा आपके आज के सेशन से, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। टीचर्स देवेंद्र जी, शशि जी तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको भी कुछ अगर बोलना है तो
तो डेफिनेटली बोलिए। अगर आप चाहे तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, अगर चाहे तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि जेफ सर समझ पाए। तो yeah, please go ahead if anyone wants to say something about today's session. Good evening, Geoff sir, and I am Devendra Kumar from India, and I am very happy to listen your program, and you are very. It is very delighted for us, all of us, all my students also, and my son and my daughter named Hemant and Trusty also joining this program, and he is listening and listening your program here, and my question to Jeff sir, that can you come again in the Zoom meeting in the future? It'll be my pleasure. Yeah. No, I'd love to join anytime that you're ready. Yeah, if you'll have me back, I'd love to speak to your kids again. They look like terrific kids, by the way. They are. They definitely are. Does anyone else have any questions? शशि जी आपको या फिर कोई भी देवेंद्र जी के स्कूल से या फिर शशि के स्कूल से, does anyone have any questions? It's been a long. Do you have? आज का सेशन बहुत अच्छा था। Thank you. कैसा? She just said that she loved the session today. मेरा नाम एकता है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। जी बहुत And शुक्रिया। are also very thankful to translate the Geoff's voice to our children in India. Very welcome. Hello, Jeff sir. Are you we are audible? Yes. Yes. So she is Ekta from class 7, and she is saying today's session was amazing, and we had a wonderful experience today. Thank you so much, the entire team of OFC. Thank you so much for giving us such a huge and great opportunity. Thank you so much. It's been my pleasure, and it was beautiful to meet you all. Girls, well done. Thanks for coming along. Yeah, thank you, Jeff, for doing this, and thank you to students for coming and listening to this. So this is great. Absolutely. Geoff sir, one more question from my side. Can I ask? Sure. Go ahead. देवेंद्र जी पूछिए question. Sir, Geoff sir's Twitter ID, Twitter handle, we want to join them on Twitter or Instagram. If it is possible for us, it is very good for us. Did you get that, Jeff? Not really. The audio is broken up a little bit. Right. Yeah. No. So Devendra sir is wondering if you or MSATT has a Twitter handle or something on some online presence where they could follow you or follow MSATT. Oh, okay. On Twitter or well, something. There's the MSATT app, but probably the easiest one to access would be the Facebook page, MSATT Facebook page. Yeah, I don't do Instagram or anything like that. Okay, but we can share the Facebook page link. Yeah, the Facebook page or the MSATT, and if students want to join the MSATT app, they've just or their teachers, probably more appropriate. If the teachers would send me their email address, I can join them, and then they can share that with the students. I think that's probably the best way to do it. Yes, absolutely. But I'd love to get in touch. Definitely. तो देवेंद्र जी, जेफ सर बोल रहे हैं कि ट्विटर हैंडल तो नहीं है, बट फेसबुक पेज है कि MSATT का, वो फेसबुक पेज का लिंक हम शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर चाहे तो MSATT का एक ऐप है, आप टीचर जो है, आप शशि जी या फिर जो भी दूसरे टीचर्स आपके स्कूल में, अगर आप चाहें वो ऐप अगर ज्वाइन करना चाहें, वो ऐप वो लोग यूज करते हैं ये इंफॉर्मेशन बांटने के लिए कि कब आज ऑब्जर्वेशन होगा कि नहीं होगा, आज ज्यादा क्लाउडी है कि कम क्लाउडी है, यही सब इंफॉर्मेशन उस ऐप में आता रहता है।
तो आप अगर आप टच में रहना चाहोगे, तो आप अगर वो ऐप में ऐड होना चाहेंगे, तो आप अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, हमको भेज दीजिएगा, हम जेफ सर को दे देंगे, एंड देन जेफ सर आपको ऐड कर सकते हैं उस ऐप में. बट अदर देन दैट, फेसबुक पेज है, वो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं MSAT का, और उसका लिंक भी वी विल प्रोवाइड टू यू. थैंक यू सर. सृष्टि, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से? इट इज वेरी वंडरफुल चांस फॉर यू एंड हेमंत ऑल्सो. No, sir. Hello, Srishti. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello. Jeff sir, Yes, sir. do you have anything to say? आपको कुछ बोलना है? आपको कैसा लगा आज के सेशन? How did you find it? Sir, today's class is very amazing. That's great. I'm glad. So I'm sure I speak for everyone here when I say that today's session, as we've already heard, was very amazing. I think the kids enjoyed it a lot. They learned a lot. They got to see how things are done with the MSAT, and they got a glimpse, I'm pretty sure, for the first time in their life, of an actual observatory, a functioning telescope in a functioning dome. They do have telescopes in the schools as well. So Aryan, whom I'm not sure we might have had introduced at some point, Jeff. So Aryan's company built the astronomy labs in these schools. So they do have telescopes, and they do they do use them to photograph the moon and the planets and stuff. But it's a big step for them to actually see like the automated telescope set up in a sort of a fixed setup inside a dome, which has been used by you and your students for such amazing work. So I think I'm sure they all enjoyed it, and as you know, this is all recorded. So people who might have missed it, people who might want to take another look, they will always, I'm sure, come back and take a look at this. So yeah, overall, thank you so much again. A huge thanks. I don't have words to thank you enough for agreeing to do this, for going up all the way to Stromlo, on a Saturday evening, and just giving us so much new things to look at. And I'm sure, as Iqbal said in the beginning, the kids are the students are whom we want to inspire, and whom we want that they would take the most out of it, which I'm sure they did, and they will. So yeah, just amazing to look at everything. And yeah, we will definitely keep in touch, and and maybe hopefully in a subsequent session, if you are free, if you're available, we would love to have you again. And I think that would be amazing. I'd love to come back, Ian. I've enjoyed this. The thing that I regret, and this is something for us to think about for the future, is being able to interact with the students. Though, this has been very much just me talking to students. It's much better if I can actually talk with individual students, one at a time in a class, answer their questions, or get them to operate the telescopes or whatever. So maybe in the future we'll be able to manage something like that. But this is a first step. Remember that MSAT started out with 2 students 7 years ago, just 2, and now we're putting through 25 a year. So you start small and you grow. So I think this is a tremendous opportunity for the students. I think they've done so well to last the distance, and I congratulate them and their teachers. So thank you very much for having me. Now, thank you so much, Jeff. Yeah, and by the way, I was just going to say, I've been checking the sky. It's clouded here, so I can't see the moon at the moment. But as I said at the beginning, kids, if you look up at the moon on your way home, the chances are very good that MSAT will be looking at the moon as well. And that will link us, that will join us between our 2 countries. And I think that's something pretty cool. That is absolutely cool. And I definitely want to echo your sentiment about the one-on-one interaction with the students. We definitely want that, and we still are working towards that. As you can imagine, in this particular setup, and this is what we at the OFC, at the One Sky team, have been trying to improve, in a sense that right now we have these 2 classroom setups because these schools are not in the most affluent cities in India.
and therefore it's most easy for the students to come to the school and join the call. I mean, some students, as you can see, they are at home and they have good enough internet connection there, which is great. But and as you mentioned, once as we keep moving ahead, hopefully we will have a cohort, or hopefully we'll be able to give them the facilities so that they can be on individual calls, which is when I think it makes it easier to interact with each participant as opposed to this classroom setup. But again, this is the first step, as you very well put it, and hopefully we can move forward from here. I'm sure we will. Yeah. Thank you. All right. Okay. Just very finally, I'll just translate this thing to Hindi very briefly. जेफ सर बहुत ही खुश हैं कि आज वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर पाए. उन्हें भी बड़ा खुशी हुआ, जैसे कि हम सबको हुआ, हमारे OFC टीम में, ऑनस्काई टीम में, हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने यहाँ पे आए या आप क्लास अटेंड किए जेफ सर का, और हमको आशा है कि आपको भी इतना ही अच्छा लगा होगा. और आप में से जिनको भी आप जब भी मन करे, ये जो रिकॉर्डिंग है ये तो हम आपको अवेलेबल कर ही देंगे, ये दोबारा देख सकते हैं आप. आपके किसी दोस्त जो आप शायद किसी वजह से आज नहीं आ पाए, उसको भी दिखा सकते हैं आप ये लिंक, ये रिकॉर्डिंग. और घर जाते वक्त आप अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो चांद दिखेगा आपको. तो वही चांद अभी ऑस्ट्रेलिया के आसमान में भी दिख रहा है, बट हालांकि वहां पे अभी बादल है, इसीलिए जेफ सर हमको दिखा नहीं पाए टेलीस्कोप के द्वारा, वरना वो दिखा सकते थे. बट यही है, उनको यही बोलना है फाइनली कि ये जो है, जो आसमान एक है, इट्स वन स्काई. तो यही बड़ा एक खूबसूरत चीज है जिसमें हम सब मिलके एक ही टाइम पे, चाहे हम कोई भी देश में हो, चाहे आप दुनिया के कोई भी कोने में हो, ऊपर देखेंगे तो एक ही आसमान देखेंगे, एक ही चांद देखेंगे, वही सेम तारे, सेम प्लैनेट्स दिखते हैं. तो यही एक खूबसूरत थॉट के साथ हम आज यहीं पे खत्म करते हैं. और हम जैसे मिलते रहे, हम अगले हफ्ते भी मिलेंगे सेम टाइम पे, और हम पिछले हफ्ते जो लास्ट चीज बात किए थे उसी से वापस शुरू करेंगे हमारा जो नॉर्मल क्लास है. तो I think आज के लिए यही है, and I think I will stop the recording here. So thank you again, Geoff. Thank you again, everyone. Thank you, students. Thank you, Ian. Thanks for setting this up. Thanks to the teachers and thanks to the students.